वेलकम टू स्पीक इजी विद कृति। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो 7 गोल्डन टिप्स जिनको यूज करके आप हो सकते हैं फ्लुएंट इन इंग्लिश स्पीकिंग इन अ मैटर ऑफ 21 डेज। यस, यू हर्ड इट राइट। कहते हैं कि 21 डेज तक कुछ भी अगर लगातार किया जाए तो वो आपकी हैबिट बन जाता है। Therefore, I challenge you, my friend, to try these tips for just 21 days and see the miracle on your own. Starting with tip number 1, immerse yourself in English. And how can you do that? If you have friends who speak good English, then you can surround yourself with them and try and hold conversations. Otherwise, you can make use of social media, entertainment channels, or news channels. Just listen to them. Watch the daily news in English. If you like cricket or any other sport, watch the commentary in English. So this is how you immerse yourself in English, and then slowly and gradually you will not even need to read the subtitles given underneath the English movies. You will easily grab the essence or the meaning of what is being said. So that's tip number 1. And yes, not to forget the podcast. If you are going on a long drive, your workplace is far away, office जाते वक्त, instead of listening to songs or music on the FM, I would say choose a podcast of your liking और उसको सुने, but it has to be in English. अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं, आपको शायद सुनकर हंसी आएगी, but Peppa Pig is an excellent example. Their English is very clear, hardly any accent, and that's a very, very good resource to learn English. If you are at an intermediate level, you can try movies like, say, Sound of Music. Why I'm saying Sound of Music? It's a classic, and it has so many, different situations and feelings, and there's too much of drama. So that movie gives you a wide range of vocabulary to explore. Therefore, pick up movies and series of your liking, but only and only in English. For children nowadays, even in Tata Sky, you get the option of switching the language from Hindi to English. The same, your favorite cartoon, you can watch in English instead of Hindi, and because आप वो पहले से देखते आ रहे हैं, आपको ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट पता है, आपको एक कैरेक्टर की बेसिक आउटलाइन पता है, उसकी कैसे वो रिएक्ट करता है किसी सिचुएशन में. So you will be able to grasp it much faster than any other new content that you are going to pick up. So now moving on to step number 2. Step number 1 हमने कर लिया, सुनिए, जितना इंग्लिश सुन सकते हैं सुनिए. Second step, read English. Most of us are able to read English pretty well. It is the speaking part of the language which challenges us. So read as much English as you can, be it comic strip, be it newspaper articles, be it articles on social media, or it could be a food blog or a travel blog which you are particularly interested in. Because if you read, that expands your vocabulary, and it also tells you the correct usage of those words in a particular sentence. So storybooks or novels is a great way to enhance your vocabulary, and you must indulge in at least 30 minutes of reading every day. Now, I'll tell you another way how you can expand your vocabulary. That is by maintaining a vocabulary journal. So that's my tip number 3. Maintain a vocabulary journal. It could be a small diary like this, because when you write a word, you write its meaning and maybe 2 sentences, how it is used in a sentence, then you definitely retain it forever. Just by reading it, you may not retain it, but if you write it, it becomes part of your long-term memory. So मैं क्या करती हूँ ना, कई बार होता है, come across a very interesting phrase or a very interesting idiom or word. उस टाइम मुझे नहीं, अगर मेरे पास मेरी ये डायरी है, what do? I just write it in the notes of my phone. हर फोन में एक नोट पैड होता है, राइट? उसके अंदर you can just jot down that word, and when you reach home in your own sweet time, remember to pen it down in your vocabulary journal. Now vocabulary journal को भी हम थोड़ा structure अगर करें तो उसके लिए एक तरीका है, बहुत simple है. In the morning, what you should do is you should try and read something for 15 minutes, maybe the newspaper, to know what is happening, all around the world. So when you read something, just pick up any one new word which you have learned and
make a note of that in your vocabulary journal. In the afternoon, when you are, you're taking your afternoon break, चाहे आप वर्क प्लेस पे हो, चाहे आप घर पे हो, थोड़ा टाइम तो रिलैक्स करने के लिए आप निकालते ही हैं. तो उस वक्त आप क्या करें? अब आप पढ़ नहीं सकते, यू आर नॉट कैरिंग अ न्यूज़पेपर और बुक विद यू, सो लिसन टू समथिंग. एंड ऑडिबल, आप ऑडिबल पे जाके कोई ऑडियो बुक कर सकते हैं सब्सक्राइब, जिसको आप सुन रहे हैं, या फिर कोई पॉडकास्ट जो आपकी चॉइस का है. देन पिक अप जस्ट वन वर्ड फ्रॉम व्हाटएवर you've heard and make a note of that in your vocabulary journal. Lastly, in the evening, now when you're back home and you're tired, you're exhausted, you want to watch something on the TV and relax, then while watching something, just make a note of one single word which really caught your eye or your attention and jot it down in your vocabulary journal. By making this a habit, you see, it's just a small habit and you're only writing 3 words per day, but you will create a bank, a reservoir of your own active vocabulary. Mind you, the vocabulary has to be active vocabulary. एक्टिव वोकैबुलरी का मतलब होता है वैसी वोकैबुलरी जो फंक्शनल है, जो डे टू डे यूज में एक्चुअली आपके काम आएगी. डोंट राइट टू मच ऑफ फ्लावरी वर्ड्स जो आप एक्चुअली कभी यूज भी नहीं करेंगे, राइट? सो फोकस ऑन एक्टिव वोकैबुलरी वर्ड्स जो आप अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में स्लाइड इन कर सकते हैं और सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं. सो दैट्स माई टिप नंबर 3. नाउ टिप नंबर 4. टिप नंबर 4 इज टू स्टार्ट राइटिंग. हमने लिसनिंग कर ली, हमने रीडिंग कर ली, अब जरूरत है लिखने की. लेट मी टेल यू, विदाउट राइटिंग यू कैन नॉट बिकम अ फ्लुएंट रीडर. सॉरी, लेट मी टेल यू, विदाउट बिकमिंग अ गुड राइटर यू कैन नॉट बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज. आप खुद सोचें, अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा है, उस टाइम आपको बात करने में ज्यादा झिझक होगी. ऑन द अदर हैंड, अगर आपके बॉस ने आपको एक टेक्स्ट भेजा या ईमेल भेजी है, आप उसको फिर भी आंसर कॉन्फिडेंटली कर पाते हैं बिकॉज यू आर गेटिंग टाइम टू रिस्पॉन्ड टू दैट टेक्स्ट मैसेज. एटलीस्ट आपके पास 2 मिनट तो होते ही हैं कि आप सोच कर अपना आंसर करेक्ट इंग्लिश में फ्रेम कर पाएं. वहीं जब हम बोलते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता. इट हैपेंस इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड. क्वेश्चन कम्स, आंसर हैज टू बी गिवन देयर एंड देन, अदरवाइज सामने वाले सोचेगा अरे सो गए क्या. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग प्रैक्टिस राइटिंग. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे राइटिंग, आपकी लैंग्वेज उतनी नेचुरल हो जाएगी. थॉट प्रोसेसेस जो है वो बहुत इजीली इंग्लिश में ही आपकी लैंग्वेज फॉर्मुलेट होगी. आप सोचने लग जाएंगे इंग्लिश में. तब आप फाइनल प्लंज, जो फाइनल लीप है ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश, उस पर कूद पाएंगे. तो अब लिखना क्या है? इसके लिए यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल. You can start by writing your daily tasks. Make a to-do list, make a shopping list, okay? Or start by writing maybe a diary. डायरी आप डे के एंड में लिखें आपने पूरे दिन में क्या किया है. These are the things which will come naturally to you. And इसमें बहुत लंबा लंबा नहीं लिखना है आपको, बहुत ज़्यादा फ्लॉरी लैंग्वेज भी यूज़ नहीं करनी है, because this is what is happening in your day to day life. So यहाँ से आप शुरुआत करें लिखने की. Another good way to practice writing is हम स्कूल में करते थे ना पिक्चर कॉम्पोजिशन. टीचर एक दिखाती है आपको, पिक्चर दिखाती थी, चाहे वो बुक में हो, आजकल स्मार्ट टीवीज है तो हम स्क्रीन पर दिखाते हैं. एंड देन द चिल्ड्रन आर आस्क्ड टू सिंपली एक्सप्लेन. ऐसे कमरे में बैठे आसपास देखें क्या कुछ है एंड स्टार्ट राइटिंग अबाउट दैट. आप किसी नई जगह पे गए हैं, मे बी गार्डन में है, वहाँ पर अपने आसपास क्या हो रहा है वो लिखें. नाउ व्हाई इट इज सिंपलर? बिकॉज एवरीथिंग इज राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज. आपको खुद से इमेजिन करके सोचना नहीं पड़ रहा है कि क्या लिखें. So you just have to observe carefully and pen down whatever you see. So ये तो हो गया हमारा step number 4. Now step number 5. इसमें हम राइटिंग को ही थोड़ा और कॉम्प्लेक्स लेवल पे ले जाएंगे. अभी तक हमने सिर्फ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखी है, जो हम देख रहे हैं हमने लिख लिया, जो हमें करना है, हमारे टास्क है, हमारी शॉपिंग लिस्ट हमने लिख दी है. बट in order to become more fluent and a more competent English language speaker, you need to understand how to pen down your feelings. After all, the purpose of communication is to develop, those intrapersonal skills, जहाँ सामने वाले की बात आप समझ पाएं और अपनी बात उनको बहुत ही सटीक और क्लियर शब्दों में समझा पाएं. तो उसके लिए my personal experiences writing a diary at night or a happiness journal
और अ ग्रैटिट्यूड जर्नल इज द बेस्ट वे. सो डायरी में बेसिकली आप अपने पूरे दिन का ब्यौरा लिखते हैं. यू कैन स्टार्ट बाय टेलिंग व्हाट हैपेंड इन द मॉर्निंग, देन इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, एंड देन रिफ्लेक्ट on maybe what was the most important moment of the whole day. कुछ ऐसा जिसने आपके दिल को छू लिया हो. It could be a happy occasion or a sad occasion, something which made you angry, something which made you jealous, something which made you excited. So it does not matter that what you are writing about, but your feelings should come in the forefront. यही अगर आप gratitude journal बना रहे हैं तो आपको थोड़ा filter करना पड़ेगा और सिर्फ अच्छी चीजें जो आपके दिन में हुई हैं उन्हीं के बारे में आपने लिखना होगा. इसका तो डबल बेनिफिट है, ना सिर्फ आपकी इंग्लिश एनहांस होगी, साथ ही में साथ इट्स वेरी गुड फॉर योर मेंटल वेल बीइंग. So you can start writing a gratitude journal or a happiness journal and be thankful to God for all the blessings, for all the good things that are happening in your life. So remember, whenever you're describing what has happened during the day, the tense that you are going to use is going to be past tense, क्योंकि ये सब चीजें वो हैं जो दिन भर में हो चुकी हैं. And maybe in the end of the diary you can talk about कल आप क्या करने वाले हैं. If you have any special plans or there is some event in your office and you're really looking forward to being a part of it, तो वहाँ पर आप future tense का इस्तेमाल करेंगे. So be very very mindful of what tense to use while writing your diary. अगर डायरी लिखने में आप उलझ गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से करें, तो इसके लिए मैं आपको देने वाली हूँ 5 W's का एक गुरु मंत्र. What are these 5 W's? सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है who से, फिर what, then when, then where, and finally why. तो who में आप लिख सकते हैं write about a person whom you met that day. Then in what you can write about any one thing that you did on that particular day. When you can talk about any particular time of frame when you were most happy during the day. That's your when. Where में आप लिखिए about any one place where you went. It could be as simple as going to the supermarket or maybe going to the temple. So write about the place where you went. Then lastly, why. You have to address this, and this is the most important one, because here you're giving justification, here you're giving reason as to why you had a good day or a bad day. So your analytical skills also come in the forefront. So accordingly आपकी जो vocabulary है वो different हो जाएगी from descriptive paragraphs to analytical paragraphs. So that's my golden tips on how to write a good diary if you're a beginner. Now step number 6 is the actual speaking. जब आपके पहले 5 steps में आप एकदम pro हो जाएं, you have to devote time. Let me tell you my friend, learning any language is a gradual process. Then you will start using the actual speaking of it. So उसके लिए क्या कर सकते हैं? If you are the shy kind, तो आप start कर सकते हैं by speaking alone in front of a mirror. Mirror के सामने बात करने के काफ़ी फायदे हैं, because you don't just speak, you also observe yourself. You see whether you are using the hand gestures properly. Is your expression in sync with what you are saying? So वो match करने चाहिए. ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप बोल तो रहे कि आई एम वेरी हैप्पी और आपके एक्सप्रेशन एकदम ज़ॉम्बी के जैसे. कैसा लगेगा अगर मैं बोलूँगी I am very happy today because I got first prize. Imagine, on the other hand, if you say, oh, I'm so excited today because I got the first prize. So that's the power of practice, and you must practice in front of the mirror. वहाँ पे कोई नहीं होगा आपको judge करने के लिए, and you will be able to get better on your own. उसके अलावा दूसरा और better तरीका है कि अगर आपका कोई दोस्त है who is maybe better than you in English, एक फ़ोन कॉल ज़रूर करें अपने फ्रेंड को. एक तो दिल हल्का हो जाएगा, साथ में आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाएगी. मेक श्योर टू आस्क योर फ्रेंड what was one thing exciting that he did during his day. अगर आप शाम को कॉल करें तो आप उसके दिन की बात करें, but also remember सिर्फ सुनना नहीं है. Then you have to also tell your friend what was the most exciting thing that you did that day. अगर उस दिन कुछ खास नहीं किया तो पिछले दिन की बात कर लें. बात करने से मतलब है, and you have to speak in English, and since that person is your friend, a confidant, तो again you would not have the fear of being judged, और आप खुलकर अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं. एक और लेटेस्ट तरीका जो आया है for my tech savvy friends, that is practicing with AI.
जी हाँ, you heard it right. There are so many AI tools which now practice conversation with you. I'm going to talk about them more in my further videos. So watch out this space. लेकिन कहने का मतलब है जहाँ चाह वहाँ राह. There are so many ways to practice speaking in English. If you are, if you are a keen learner. So that brings us to the end of the video with my tip number 7, and that is be persistent, be consistent, and don't give up. Language learning cannot happen overnight. आपने भी तो पहले ब ब म म से ही शुरुआत की थी और उसके बाद आज आपकी हिंदी स्पीकिंग या रीजनल लैंग्वेज में जो कमांड है वो कितनी दुरुस्त है, कितनी अमेजिंग है. सेम वे इंग्लिश को आपको बिल्कुल पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है उसका साथ, और आपको रोज प्रैक्टिस करनी है. इफ यू कैन नॉट डिवोट like hours and hours to it, at least spend half an hour during a day practicing, maybe 15 minutes in the morning and 15 minutes at night. 21 days तक आपको ये हैबिट्स जो भी मैंने आपको टिप्स बताई हैं इनको प्रैक्टिस करना है. सुबह स्कूल जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले practice speaking in front of a mirror and then head out. That will also give you the confidence for your whole day. And when you come back, reflect on your day. How was your day? You can write about it in your diary or call your friend, discuss it with your friend. So if you devote just 15 minutes in the morning and 15 minutes at night for practicing your English speaking, I'm sure, I have full faith in you that you are going to come a long way and become a confident and competent English speaker. So if you like the video, do remember to press the bell icon for notification and the like button. Do watch out this space for more such informational videos. This is Kriti Sharma signing off. Bye-bye.